The question is, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form of 3q or 3q plus 1 for some integer q. And we know that the Euclid division lemma is given positive integer a and b, there exist unique integer q and satisfying a equal to bq plus r, where 0 is less than equal to r is less than b. This is Euclid division lemma. हमें इस क्वेश्चन में we have to prove that any positive integer is either the square of any positive integer is either 3q or 3q plus 1. हमें ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसका यूज करके हमें प्रूफ करना है. वी हैव टू प्रूव दैट any positive integer square of any positive integer is equal to either of 3m or 3q or 3q plus 1. The Euclid division lemma is a equal to bq plus r and 0 is less than equal to r is less than equal to b. Let a be any positive integer and b is equal to 3, then a equal to 3p plus r, where 0 is less than equal to r is less than 3. अब ये जो टर्म है इसका मैं मीन्स है मैं एक्सप्लेन करूँगी. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसे कि 13 है. 13 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, यहाँ ये जो 3 है वो क्या है, ये जो 3 है वो क्या है, डिवाइजर है. हम इसको लिख सकते हैं हियर a इज द डिवाइडेंड is equal to 3 is the divisor and p is q10 and r is remainder. अगर कोई भी डिवाइड है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट मीन्स डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई q10 प्लस रिमाइंडर. दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा. हम इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे. तो इसके लिए मैंने लिया है 13. 13 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो डिवाइड जाएगा 4 टाइम्स एंड वी गेट 12. बाई सब्ट्रैक्टिंग 13 minus 12 we get 1. Here 1 is remainder and 4 is q10 and 3 is डिवाइजर. और हम इसको इस फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 8 डिवाइडेंड, इट मीन्स 13 इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 3 मल्टीप्लाई q10 दैट इज 4 प्लस रिमाइंडर दैट मीन्स 13 इज इक्वल टू 13. देयरफॉर ये क्या है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है. क्लियर इट. और इसमें ये जो डिवाइजर है वो क्या है, 3 है. इसका मतलब है अगर हम कोई भी नंबर हो उसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा. और क्या हो सकता है, और इसके लिए मैं एक और नंबर लेती हूँ 4. अब ये नंबर क्या हो गया, 134 हो गया. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14. और 14 को 3 से डिवाइड करेंगे
it become 4 times and we get 12. अब 14 minus 12 we get 2. रिमाइंडर फर्स्ट टाइम क्या था 1 था, अब रिमाइंडर क्या है 2 है. अब मैं एक और नंबर लेती हूँ 4. 4 को हम यहाँ राइट करेंगे तो क्या हो गया 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स एंड 24 एंड रिमाइंडर इज 0. तो इस डिवाइड से हमें पता चला रिमाइंडर क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 0 हो सकता है. और हम किसी भी डिवाइड में देख लें जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो उस नंबर से लेस होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है बट उस नंबर से लेस होगा. इट मीन्स जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल भी होगा, इक्वल हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है बट जो डिवाइजर है उससे लेस होगा. ठीक है, तो यहाँ जो रिमाइंडर है इट मीन्स जो आर की वैल्यू है वो क्या हो सकती है आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 2. ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं. तो दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड वी कैन, और इसको हम सॉल्यूशन में राइट नहीं करेंगे, ये ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, ये जो टर्म है वो राइट नहीं करना है. एंड लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3. हमने लेट किया है कि ए एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है और बी क्या है 3 है. बी 3 है तो आर की 3 कंडीशंस हो सकती हैं. क्या हो सकती हैं, आर इज इक्वल टू 0 होगा, आर इज इक्वल टू 1 होगा और आर इज इक्वल टू 2 होगा. एंड आर इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2 बिकॉज 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन 3. लेस देन इक्वल टू का मीन्स होता है कि जो आर है वो 0 के इक्वल होगा बट और इसके साथ में जो आर है वो 0 से ग्रेटर भी हो सकता है. ठीक है, देयरफॉर A is equal to 3p because when r is equal to 0, in this condition when r is equal to 0, A equal to 3p, and when r is equal to 1 then A is equal to 3p plus 1, and when r is equal to 2 then A equal to 3p plus 2. There are 3 cases. Now we take first case. When r equal to 0 then A equal to 3q. Squaring both sides it become a square and it become square of 3q. A square is equal to a square and square of 3q is equal to 3 square multiply q square, and a square equal to 9q square, and we can write it as 3 multiply 3q square because we can write 9q square is equal to 3 multiply 3q square. And if we write this is p, and a square is equal to 3 multiply 3p square, and we can write it as a square equal to 3q, where q is equal to 3q square because हमने 3p स्क्वायर की प्लेस पर क्या पुट किया है
q, where q is equal to 3p square. Now we take case second. Case second is when r equal to 1. When r equal to 1, then a equal to 3p plus 1. By squaring both sides, a square is equal to 3p plus 1 whole square, and it becomes 3p square plus twice of 3p multiply 1 plus 1 square, because whole square of a plus b is equal to a square plus 2ab plus b square. Here a equal to 3p and b equal to 1. By squaring 3p plus 1, we get 3p square plus twice of 3p multiply 1 plus 1 square, and we get 3p square is 9p square plus 2 multiply 3, 6p plus 1. Now by taking 3 as common in these two terms, 3, we can write it 6p square plus 2p plus 1, and when we write this term as q equal to 6p square plus 2p, and we get a square is equal to 3q plus 1, where q equal to 6p square plus 2p is an integer. Now case third, when r is equal to 2, then a equal to 3p plus 2. By squaring both sides, a square equal to 3p plus 2 whole square of 3p plus 2. It become a square and it become 3p whole square of 3p plus twice of 3p multiply 2, twice of ab plus 2 square, because whole square of a plus b is equal to a square plus 2ab plus b square, and 3p square is 9p square, 2 multiply 3 that is 6, and 6 multiply 2 12 plus 12p plus 2 square that is 4. Now we write it as 9p square plus 12p plus, we can write 4 as 3 plus 1. Now we take 3 as common in these three terms. By taking 3 as common, it become 3p square plus, by taking 3 as common, it remain 4p and plus 1 and plus 1. Now we write this term as q. A square is equal to 3q plus 1, where q equal to 3p square plus 4p plus 1 is an integer. Hence, the square of any positive integer is either of the form
3q or 3q plus 1 for any some integer. Q.